पाँच साल अंदर बहु काल पैर गया। काबू में कुछ नहीं रह जाता है, जब पानी नहीं है तो वो उसका सब ताकत खत्म हो जाती है। 8-10 साल के पहले बहुत बरसात होती थी और अभी कभी भी बरसात होती है, जैसे कि अभी बरसात के दिन नहीं है तो भी बरसात होती है। तो यार कुछ नहीं कर सकते, उपाय नहीं है। ज़्यादा तो मैं आवेद घणी ज़्यादा वे नहीं, मैं आवेद कटाई ज़्यादा आवे सब है, पानी की व्यवस्था से सब काम गिरा हुआ है। जो है जो पानी ही है पानी। हाँ हाँ ये बात है। किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला. For a long time, farmers of the world were given a lot of social prestige, and they were important because they were keeping humanity alive, because we live on this earth by the courtesy of sunlight and of the farmers who harvest the sunlight through green plants. These are our two real hosts, the sun and the farmer, and their marriage is the one which is helping us. Over the last 50 years, almost 45% of the variation in our GDP has come from variations in rainfall alone. 5 साल में पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हर साल बारिश का कुछ तालमेल नहीं रहा है और बाद में कम ज़्यादा बारिश होने लगी। वर्षा कम हो रहा है, कमी से मौसम तो बदल ही रहा। पानी चाहिए तब पानी नहीं आता, जब नहीं चाहिए तब पानी आता है, तो उससे बहुत सारा नुकसान होता है। हम लोग तो जो नवंबर दिसंबर में जनवरी में जो पानी गेहूं को देना पड़ता है, जनवरी फरवरी, उससे पानी की कुताही तो गर्मियों की तो होने वाली नहीं थी। अगले साल भी पानी कम था और हारण वो पक्की है, उसमें कुओं की मदद से पानी ला के पिलाई की, तो उधर तो गेहूँ थे और इधर कुछ नहीं था। घर पे ही अनाज कम वे, पानी कम खेती है, कम अनाज वे, पानी है नहीं, कूड़ा में तो कई खेती करा, मानदानगी करा। And adaptation is something which the entire farming community continuously does. We have to help them to adapt more quickly, and we have to help them to be more secure against possible contingencies which they've never seen before. They're likely to see more frequently. पर्यावरण में अभी बारिश तो हिसाब से नहीं हो रहा। पहले कैसा था, टाइम पे गिरता था, अभी गिरेगा तो कम गिरता, वो टाइम पानी कम हो जाता खेती को, अभी गिरता तो ज़्यादा तो नुकसान हो जाता। सरकार करता बोल के बोलते, फिर क्या नहीं करते। The local community, the local farming community are confronted with puzzlement. There isn't enough knowledge around of what is happening and what we should be doing to mitigate or adapt to those new emergent situations. Therefore, the Swiss Agency for Development Cooperation, the MS Swaminathan Research Foundation in Chennai, and many other organizations got together and decided that we must first listen to the grassroots, their voices, their problems, their own solutions, because many times they have also a solution, so that whatever policy is developed becomes more people driven, demand driven, not purely supply driven, based on the best combination of traditional wisdom and experience and modern science and technology. The public policy then will have more impact, there will be greater impact, and it will achieve the purpose. जहाँ अच्छी तरह से यानी कि फसल नहीं आई तो इनकम कम मिलता है, और जो कर्जा लिया होता है वो जो वापस देने का वो बहुत वक्त लगता है उसे। हर साल हम लोग मतलब खाद लेते हैं और जो क्रेडिट कार्ड बनाए उसमें बीमा करता है, कभी किसी को सूखा होता है, तीता होता है, कभी बीमा वापस ही नहीं हुआ, ना मिला है, ना जानते हैं किसान लोग होता क्या है। बीमा बराबर लेते हैं नहीं, टोटल आज तक बीमा का पैसा मतलब बराबर करता है। सरकार की अर्निंग तो हो रही है लेकिन किसान को नहीं मिल रहा। खेती की बहुत बुरी हालत है, लेकिन यानी कि इतनी खेती है तो छोड़ के भी नहीं जा सकते ना। हमारे पास ग्रेजुएशन भी नहीं है बाहर जाने के लिए। इतना करना बहुत चाहती, लेकिन वो उसके मुकाबले से
ये साथ नहीं देती खेती। खेती करना चाहता हूँ। पहले वो कम भी किया तो साथ देती थी, कम मेहनत किया तब भी साथ देती, अब ज़्यादा मेहनत करने के भी साथ नहीं देती। मेरे बच्चे तो कर नहीं सकते, अभी वह सब बेच लेंगे खाएंगे बोल के रहते। आर्थिकता जो है ज़्यादा बिगड़ गई है, कर्ज में जो है बैंकों में आदि फंसा हुआ है और बेईमानी बन रहा है, जबकि बेईमान नहीं होना चाहता है। देखो बच्चे पाल लें तो ये मजदूरी भी करेंगे, कुछ नहीं कुछ तो करेंगे। खेती में तो पैसे दे जाइए, अब खेती कम पड़ेगी ना, बिना लोग बाग अब ज़्यादा हो गया तो जाए मजदूरी अदेपुर। Actually reversing the process and putting together the elements of a plan based on the daily experiences of people and communities who are actually experiencing the effects of climate change. And I think the challenge for us is really to integrate this top-down National Action Plan on Climate Change with this exercise that you have started, which you have initiated, a process by which you are putting together the shared experiences of communities to the impacts of climate change, and from that deriving experiences and lessons for what public policy should be doing. किसान खेती के बिना जी नहीं सकता, और खेती के साथ हर चीज़ आएंगी, गायें, भैंसें, कुआ, बैल, ये हल, जूड़ा, ज़मीन, ये किसान के पास सब होगी तो खेती होगी। क्या देखो क्या गाँव में तैयारी सब के भी हुए कि हमरे हरण करामने वो खुदामनो है वो पेछने हमरा कोई अपने बीजवा रोल दे वो है तो गमेर तैयारी वो है के या 300 रुपया 500 रुपया ज़्यादा मानो बीघा में खर्च आनी इलेक्ट्रिक खर्च आवे। बिजली नहीं है तो पंप सेट चलाएंगे डीजल वाला, तो डीजल से चलाएंगे, उससे थोड़ा महंगा पड़ेगा। वो खेती में तो महंगाई बढ़ी है नहीं, वो तो डीजल लिया तो वो तो अपन कमी पड़े। Energy efficient policies being harmonized with growth efficient strategies need in some kind of a different approach than is currently being followed. And how does one have food security with a different kind of a cropping pattern which is less dependent on water, less dependent on pesticides and less dependent on fertilizers and energy than has been the paradigm in the past. We initiated a program to realize that the biggest problem is that the energy efficiency mission program, actually there is no R&D component, but it is this which kills very large amount of deforestation. Whether it's making a brick, even the jaggery, everybody burns wood. So that huge energy efficiency mission should have huge R&D to reduce energy requirement of producing whatever the farmer needs. కరెంటు 9 గంటలు ఇస్తున్నా, కరెంటు 7 గంటలకే వచ్చింది. ఆ వచ్చిన 7 గంటల కూడా మాకు సరిగా అందడం లేదు. మధ్యలో వీలు తెగిపోవడం కానీ, ట్రాన్స్ఫారాలు 3 రోజులకు ఒకసారి కాలిపోవడం కానీ, ఇటువంటివి మాకు జరగడం వల్ల పంట నష్టం జరుగుతుంది. नहीं, कमियां तो है। कमियां ये है कि जो काम कर रहे हैं मगर करने के बाद उसकी तरफ ध्यान रख रखाव का ध्यान नहीं दे रहे अपन। अगर हमारे यहाँ पानी हो जाए संपूर्ण विकास अपने आप हो जाए। So perhaps the need of the day is local action for local problems, especially in the water sector. जैसे कि हमारे घर के लोग बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि हम खेती में रहते हैं तो खेती का सुधार करना, नए बियाने हो अभी बोना है, अभी ऐसे कर रहे हैं हम। ग्राम पंचायत है लेकिन ग्राम सेवक ज़्यादातर आते भी नहीं है, और कृषि खाता है वो कभी आते भी नहीं है, लेकिन वो अगर आए हमको ज़्यादातर खेती की इन्फॉर्मेशन दे तो हम अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। I am not so worried about the science part. I am sure the scientific community led by people like Dr. Brahmachari and our ICR institution would be able to
find the solutions. The real challenge would be to take that knowledge to the people whom we saw on the screen. There is a huge gap. There is a gap in extension. There is a gap in translating the knowledge to the field. And therefore, the whole policy challenge and implementation challenge would be there. We are now working in thousands of villages, in lakhs of hectares, and to fantastic results. Primarily because it's people who understood it, it's people who executed it, it's people who took the ownership of the program. We became only facilitators and guided and supported them from outside. The National Policy Dialogue on Climate Change Action in India is a very good example that could inspire other countries, and it would be also very valuable for international South-South knowledge sharing. Going to international bodies and having targets and resolutions are not helping to us to achieve the target. This is because the people who are concerned, the people who are most concerned, their voices are not being heard, their views are not being heard. And this is where I think it is very important today in terms of climate change, which could be a mega calamity because it affects the poor, and the poor in all nations, the poor nations and the poor in all nations. The Indian position has been that irrespective of what the international conversation is, we should be taking actions on our own which are good for us, which are no regrets measures, which actually lead us towards a path of sustainable development. मैं हूँ अब मेरे पास कुछ नहीं चलेगा, मैं जाऊँगा सरकार के पास, पैसा लाएंगी, लोन लेंगे तो वो लोन साल भर देखेंगी और 2 साल देखेंगी। मेरे पास नहीं तो कुआं, नहीं हल्दर, नहीं आटा, नहीं आदू, कुछ नहीं। पैसा की चीज़ तो वही है, चना है। कमाई नहीं करेंगी तो वो पैसा सरकार का ले के खा के मुँह बैठ जाऊँ, नहीं बैठ सकोगे, सरकार कुल के करेगा नहीं। ऐसा है साहब।